everyone, this video is part 2 of the topic function. Last video में हमने cover किया था introduction of function, uses of function, types of function and how you can define user defined function. इस वीडियो में मैं आपको एक recap दे देती हूँ कि हमने function कैसे create किया था. def is a keyword to define the header line of the function. उसके बाद function आपको जिस भी name से रखना है. यहाँ पर अगर आपको sum करना है तो sum, average है तो average. This name is just like a variable name and should be meaningful. And rules are same. Then आपको कितने numbers का sum करना है वो आपको उतने variables यहाँ pass करने होंगे. This is called parameters. Okay, A, B, C हमें क्योंकि हमें यहाँ पर 3 numbers को pass करना है. Then उसके बाद आप colon देंगे. उसके बाद हेडर लाइन के बाद आपको उसका बॉडी पार्ट देना होता है कि आप उस फंक्शन के अंदर क्या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं. लाइक अगर मुझे इन 3 नंबर्स को इनपुट करना है अगर या सीधे आपको कैलकुलेशन करना है. हियर आई एम डूइंग द कैलकुलेशन ओनली एंड देन यू वांट टू प्रिंट. ओके, आई एम प्रिंटिंग हियर. Taking some time. Okay, printing. Okay, this is called definition of a function. Now how you can call the function. X is equal to, either you can input the value. I'm not taking the value from the keyboard. I'm just writing the direct value here and storing a direct. Okay, now how you can call the function sum. You will pass x, y, z. The last video I told you कि x की वैल्यू a में पास होगी, y की वैल्यू and z. Whatever the data type, हम जिससे भी data type की वैल्यू देते हैं accordingly उसी data type की वैल्यू correspondingly यहाँ पर पास हो जाती है x. Okay, and then okay, now I'm trying to execute this. Before executing, it's asking for save the file. Demo2, save. See, the result is 90. So this is a way how we can define the functions. Now, let's come to the next part or the next topic of a function, that is a return. That day also I told you, if we want to use that value that we have calculated, here what we did, हमने इसको यही प्रिंट कर दिया. अगर किसी रीजन से मैं इस कैलकुलेटेड वैल्यू को अपने प्रोग्राम में आगे यूज करना चाहती हूँ, वो पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर rather than print the value, हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे. So what is the purpose of return keyword? कि हम कॉलिंग फंक्शन को उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके वापस कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया r. व्हाट विल हैपन व्हेन वी कॉल द फंक्शन सम, ये वैल्यू पास ऑन होंगी, कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट जो भी रिजल्ट आएगा कंप्यूटर इसको यहाँ पर रिटर्न करेगा और r में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी. इफ अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, सम निकालना है, अगर मुझे फर्दर इस वैल्यू को यूज करना है, आई कैन यूज इट. So this is the purpose, this is the need of a return keyword. I'm showing you, I'm just using, I have used this R. Now I've calculated the average by using that sum. मैंने यहाँ पर इसका average निकाले और उसको return कर. Okay. Now there's some. Now, just check this example. What we are doing in this example, let's see. At a time, if we want to return a multiple values, that is also possible Python only. See, I've just created function sum. Okay, this function name can be cal or whatever you want to do. In this function, I'm passing 2 values, a and b. X और y की जो values है, sum 220 10 मैंने यहाँ पास किया. अब मैं यहाँ पर डिफरेंट कैलकुलेशन कर रही हूँ, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, और मैं इसको रिटर्न भी करना चाहती हूँ. यहाँ पर देखो I'm passing C, D, E. If you want to return a variable
that is also possible. If you want to return a constant value, that is also possible. यहाँ पर मैंने इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में की वैल्यू को रिटर्न किया है, a divided by b, that is also possible. So हम रिटर्न के संग रिटर्न वैल्यू कैन बी लिटरल, वेरिएबल एंड द एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मल्टीपल ऑल्सो. नाउ सी हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग. 2010 पास किया, सम में z में हमने चारों वैल्यू को रिटर्न किया. नाउ वी विल ट्राई दिस प्रोग्राम प्रैक्टिकली कि z किस तरह से प्रिंट होगा. इसका आप रिजल्ट देखिए कि ये रिजल्ट इंडिविजुअली नहीं प्रिंट करेगा, कि आगे ब्रैकेट होंगे, राउंड ब्रैकेट्स. इस डाटा टाइप को हम बोलते हैं टपल. इसका मतलब अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं तो जिस वेरिएबल में स्टोर होगा उसका डाटा टाइप होगा टपल. लेट्स सी द एग्जांपल. I'm creating the another program for the same. Define tell a comma b I'm taking only two variables right now. Then return c d and then c divided by d. I'm just calling the function kl. We are passing any two values. You can take the input of these values also. Z. C. Now see the result. Z. It's printing. We are here. We are printing the value of Z. 5. ठीक है. A plus B 2 plus B 5 हुआ. A minus B minus 1 हुआ. Then हमने C divided by D किया, जो भी रिजल्ट था 5 minus 1 पॉइंट minus 5.0 के फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल गया. लेकिन ये these values are not individual. You can see here they are grouped and the data type we can check the type also of this variable. There is a one function that is called type. With the help of the type, we can check the data type of any variable. Okay, I'm just giving another example. Okay, we have only this. See, what is the data type of Z? This is called tuple. That's it. Okay. So, what the return is doing? Return is returning the values to the called function. Now, just come to the second example. In this example, what's happening? हमने यहाँ पर सम में 10 और 20 पास किया, सम हुआ, प्रिंट सी भी हुआ, रिटर्न भी हुआ. बट यहाँ पर हम ठीक है रिटर्न हुआ. जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारा रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा, वो z में कुछ स्टोर करेगा एंड उसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो व्हेन वी आर नॉट एबल टू रिटर्न एनीथिंग हियर, मतलब मैंने यहाँ पर रिटर्न के संग कोई भी वेरिएबल रिटर्न नहीं किया है और मैं उसको स्टोर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या वैल्यू प्रिंट स्टोर होगी? दैट विल बी नन, क्योंकि रिटर्न के पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है. इट्स एम्प्टी हियर. इन दैट केस इट विल रिटर्न नन. अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इसका देखते हैं. व्हेन वी जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, कंपाइलर सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल नॉट गो इनसाइड, सिर्फ इसकी डेफिनेशन डिफाइन करेगा मेमोरी में कि हाँ उसके पास कोई फंक्शन है. इसके बाद यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 10 होगी, y 20 होगी, सम कॉल करेगा, इसकी वैल्यू पास ऑन करेगा. नाउ दिस फंक्शन वी कॉल्ड एंड देन a की वैल्यू 10 20 पास होगी एंड देन प्रिंट कर देगा एंड देन रिटर्न करेगा. तो यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 30.
एंड जब यहाँ पर रिटर्न करेगा नन तो यहाँ पर वैल्यू होगी सेट की वैल्यू होगी नन। सो आपके पास यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि हम पहले तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिटर्न, हम मेन फंक्शन में कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज कर सकते हैं, हम रिटर्न के साथ मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर हम एनी केस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू जो रिटर्न होगी दैट विल बी नन। ओके, नाउ जस्ट कम टू द वन मोर थिंग that I have to tell. This is a second example. I think this is a now. In the previous example, हमने क्या किया था, जो रिटर्न वैल्यू थी वो एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर की थी, तो उसकी वैल्यू z थी। टपल हो गया उसका डाटा टाइप। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं, हाउ मेनी वैल्यूज वी आर रिटर्निंग हियर, ए बी सी ए बी, यानी 4 अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर हम इनको अलग अलग वेरिएबल्स में भी स्टोर करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हाउ कैन वी डू दिस, यहाँ पे देखिए आई हैव टेकन 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी एंड सम इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर ए में सी की वैल्यू जाएगी, बी में डी की वैल्यू, सी में ई की वैल्यू और डी में ए डिवाइडेड बाई की वैल्यू स्टोर कर देगा एंड देन इट विल प्रिंट इंडिविजुअली। नाउ दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमने आज रिटर्न का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स और आगे क्लियर करते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो एक बार आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू, यहाँ पर मैं ये वाला प्रैक्टिकल भी आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। ए बी, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर सी, नाउ प्रिंट a comma b comma c. Now just print the data type A only. I'm printing the data type A only. C, or you can take the print of C. Okay, now just execute it. See what will happen. C. Now its data type is not a tuple. It's printing the value individually A, B, C, and here I just check the value type of C only. So because this value is decimal, so what is the data type of that decimal value is float. Okay, now just come to the concept arguments and parameters. What is called argument and what is called parameter? I'm just showing the next result, but this thing will be very clear to you. Arguments, the values that we pass to the function, that these are called arguments. यहाँ पर मैंने x और y को पास किया है, ये कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर x और y होंगे आर्ग्यूमेंट्स। जब फंक्शन के टाइम में हम ऊपर इसको डिफाइन करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम में जब हम ये वैल्यूज लिखते हैं या वेरिएबल्स लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। सो दे आर टू थिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। एक बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम आर्ग्यूमेंट बोले या कब किसको हम पैरामीटर बोले, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ एक्स और वाई जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आपके लिटरल्स भी हो सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय द लिटरल्स, मींस कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब पैरामीटर्स होते हैं दैट कैन बी ओनली वेरिएबल्स। इट शुड बी ऑलवेज वेरिएबल्स। आज के लिए इतना आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, आज इतना ही रखते हैं।